Hello friends, welcome to P-eduKUL Digital Learning Solutions. My name is Pooja. लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे स्टाफिंग, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में स्टाफिंग. इस बार हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग. लेट्स स्टार्ट देन. इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग में द पॉइंट्स आर एज फॉलोज. द फर्स्ट इज इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन. हम डायरेक्टली मूव करते हैं. लेट्स नॉट गो थ्रू द पॉइंट्स. इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन. व्हाट इज इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन? अगर हम अज्यूम करते हैं दैट देयर आर नो ह्यूमन बींग्स इन द ऑफिस, ओके, करंट सिनेरियो में देयर आर नो ह्यूमन बींग्स इन द ऑफिस, तो क्या होगा? सिर्फ कंप्यूटर्स है. तो इज इट रियली पॉसिबल फॉर द ऑफिस, फॉर द कॉर्पोरेट, फॉर द कंपनी टू फंक्शन इवन? इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो इट इज़ द ह्यूमन रिसोर्स that is the only resource that actually makes the company work, right? It is the human resource which is the main factor that is making all the other resources. What are the other resources? Men ही men को काम पे लगाएगा. machines, obviously computers कौन चलाता है? बाकी सारे machines कौन चलाता है? men ही चलाते हैं. men, women, whatever, men is in general. money, अगेन whoever. So सारे resources सिर्फ materials again are handled by the men. So human resource is the only resource that is making the whole organization actually put to work. So only a person can put an effective use of other factors, right? Staffing is concerned with human resource and managing the same. So अगर staffing है नहीं, staffing as a function is not available, तो none of the other functions are useful. Builds relationship. What do you mean by building relationship? Staffing includes recruiting. हम लोगों ने पहले देखा है when we were looking at nature and meaning of staffing. We have seen staffing includes recruiting, training, compensating, motivating, etc. It helps to build human relations. Right? It is not a very technical kind of function. Right? मतलब प्लानिंग इज़ अ वेरी टेक्निकल फंक्शन. ऑर्गेनाइजिंग इज़ ऑल्सो अ वेरी टेक्निकल फंक्शन. कि एक पेपर पेन लेके बैठ गए कि हमको कल जाके क्या करना है, राइट? बट स्टाफिंग इन्वॉल्व्स अ वेरी ह्यूमन साइड टू इट. आप अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है आपका, आप उसको अगर जाके अपने बारे में कुछ बताते हो कि जैसे द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर टेक्स केयर ऑफ ऑल योर इमोशंस एज वेल. आज ठीक नहीं लग रहा है, राइट? all your mental health issues are also taken care of by the human resource manager. That this particular function, I am not able to function in this as an employee. I am not able to manage in this particular function. The human resource manager is a person who maybe has a human side to him, is assumed to have a human side to him, right? This particular function in itself has a human side to it. इसमें ना emotions है, तो इसमें human relations build होते हैं, correct? आप सबसे पहले अगर आपके केस में, खुदा ना करे, आपके केस में अगर harassment होती है, any kind of sexual harassment case happens in the company, the first person that a lady or a woman goes to is a human resource manager. Why? Because that is the first person that any person, any woman would go and trust. Trust is not a technical emotion, it is a very human emotion. तो trust किस पे करते हैं? तो trust सिर्फ हम human resource manager पे करते हैं. तो इसका मतलब है दैट बिल्डिंग ह्यूमन रिलेशंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन का काम स्टाफिंग एज अ फंक्शन करता है, राइट? एज अ रिजल्ट देयर विल बी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन अमॉन्ग्स इट्स एम्प्लॉयज. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. ह्यूमन रिसोर्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट ऑफ अ बिजनेस. स्टाफिंग फंक्शन इन्वॉल्व्स रिक्रूटिंग राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब. ये हम लोग बहुत पहले से देख रहे हैं कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब करना सबसे इम्पॉर्टेंट काम है. अदरवाइज ना कंपनी चलेगी, ना बंदा काम कर पाएगा. मोर ओवर, इट टीचेस डिसिप्लिन एंड एथिकल वर्क कल्चर टू द एम्प्लॉयज.
ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड ऑन अ रेगुलर बेसिस टू द एम्प्लॉयज। बंदा काम करते करते बहुत थक जाता है, so every time a human resource manager has to intervene and make sure that the fatigue is also removed, the fatigue that a person gets from working. The human resource manager has to intervene and say that you have to get into a training for 2 days and make yourself get yourself away from work for 2 days and train yourself to do better. What is the long-term effect? An employee who is efficient, well-trained and loyal is very important asset for an organization. Now, वो efficient कैसे रहेगा, वो loyal कैसे रहेगा और वो well-trained कैसे रहेगा? पहले तो efficient कैसे रहेगा? वो efficient सिर्फ ऐसे रहेगा कि वो पहले तो he is the right man for the right job, right? He is doing his काम ठीक से. अगर वो वेल ट्रेंड कैसे रहेगा, तो वो हर बार अपना काम करने के बाद उसको ट्रेनिंग मिलता जाएगा, तो वो वेल ट्रेंड रहेगा. दैट मीन्स इट इज़ अगेन अ स्टाफिंग का जॉब. थर्ड इज मतलब एफिशिएंसी इज बेसिकली स्टाफिंग का जॉब बाय रिक्रूटिंग हिम फॉर द राइट जॉब. वेल ट्रेंड इज ट्रेनिंग हिम. लॉयल्टी इज बेसिकली बाय ह्यूमन रिलेशंस मेंटेन करना उसके साथ, by being available for that person, by listening to him, by making sure that this person is उसको कुछ कमी ना हो लाइफ में. that is the job of HR managers. वेरी इंपॉर्टेंट एसेट. अगर वो बंदा एफिशिएंट है, वेल ट्रेंड है, लॉयल है, ही बिकम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन. और जिस ऑर्गेनाइजेशन को ये बात समझ में आती है, दैट ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज गोज far places. In the long run, the success of an organization depends on its employees. Therefore, the staffing function has a long-term effect. Essential contribution. As stated in the earlier point, staffing has a long-term effect. Staffing is not a short-term contributor. Before recruiting, an organization should understand that the problems it is going to face and role of a prospective employee in such scenario. The contribution of a prospective employee should then be taken into consideration before hiring. So basically, an organization should understand that the problems it is going to face and role of prospective employees in such scenario. किसी भी scenario में जो भी problems आने वाले हैं, उसका पहले से that before recruiting that employee, अगर ये employee छोड़ के जा तो हमारे एम्प्लॉयज़ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या प्रॉब्लम्स आएंगे, इसका पहले से सॉल्यूशंस हमारे पास रेडी होने चाहिए. और उस बंदे का रोल क्या होगा, इसका भी हमारे पास पहले से सॉल्यूशंस, सारे सिनेरियोज, एवरीथिंग हैज़ टू बी डन एंड रेडी. इम्प्रूव्स एफिशिएंसी. स्टाफिंग हेल्प्स इन ट्रेनिंग एंड अपग्रेडिंग स्किल्स ऑफ एम्प्लॉयज़. दिस improves the productivity as well as efficiency. So we have seen in the previous functions as well as in the previous points that company is not a stand-alone thing, right? It is made up of group of people. So when every person is trained and uplifted, हर एक बंदे का जब ये efficiency बढ़ता जाएगा तो पूरी कंपनी का efficiency बढ़ता जाएगा. So basically हर एक बंदे का प्रोडक्टिविटी बढ़ता जाएगा, एफिशिएंसी बढ़ता जाएगा, द कंपनी विल ऑटोमेटिकली बिकम एफिशिएंट. मेंटेन्स हार्मनी. इट इंक्लूड्स अप्रेजल, प्रमोशंस. व्हाट इज अप्रेजल? अप्रेजल इज बेसिकली एट द एंड ऑफ द ईयर, जब भी हम लोग देखते हैं कि पिछले साल में आपने क्या काम किया, ओह वाओ, आपने एक्चुअली अटेन्ड योर गोल्स, एंड देन वी मेक श्योर दैट वी रिवॉर्ड यू विद अ बोनस, वी रिवॉर्ड यू विद and additional benefits, we have to reward you with promotions. So basically appraisal, promotions also for which certain standards are set. So that is known as appraisal. The expectations of organizations are informed to the employees. So what is informed to the employees? Expectation of organization matlab I expect from you that you perform to a particular level every year. तो ये मेरे goals है आपके लिए.
So I have set these particular goals for you. Now you perform to those levels, right? There is no confusion or bias. That is known as KPIs or goal setting. And this helps in maintaining peace and harmony in the organization. मतलब इससे क्या होगा? That there is no confusion, there is no favoritism that happens. तो मतलब ऐसा नहीं कोई बोल सकता है कि मैं मेरे मैनेजर का फेवरेट नहीं था या फेवरेट नहीं थी, या वो फेवरेट था इसके लिए उसको प्रमोशन मिल गया, मैं फेवरेट नहीं थी इसके लिए मुझे प्रमोशन नहीं मिला. डजंट हैपन दैट वे. You did not achieve your goals. He did achieve his goals, and that is the reason he got promoted. You did not. As simple as that. So there is no confusion, no bias. As simple as that. Clear. Provide job satisfaction. When the staffs are trained and motivated, their efficiency increases, their productivity increases. They have proper knowledge of what and how they have to do whatever they have to do. Correct? When they perform their job well, they get incentives and they are promoted. Simple. So it is like एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक. स्टाफ को आपने रिक्रूट कर लिया बेस्ड ऑन देयर डिग्री, उसके बाद उनको ट्रेनिंग दे दिया, उनको एफिशिएंट बना दिया, उनका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गया, उनका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने के बाद उनको प्रॉपर नॉलेज आ गया, प्रॉपर नॉलेज आने के बाद उनका जॉब इंप्रूव हो गया, उनको once they have started doing their job well, they get incentives, they get promoted. Once they get promoted, उनको पता है कि once they have started doing things, they are going to get promoted and they are going to get incentives. This increases the overall job satisfaction. It is a very very human nature to do all this, right? ये सब बहुत human nature है. Next is better performance. One of the main aspects of staffing is proper recruitment. In order to get selected over others, employees then perform work in a better manner. They try to be more efficient. मतलब I'll tell you a very good example of it. कि आपको पता है कि every time there are new recruits that happen. So existing employees also tend to be a little insecure. उनको लगता है कि आने वाला बंदा अगर मेरे से ज़्यादा अच्छा हुआ तो इसके लिए what they do is they try to be much better than the person coming from outside. That is the reason they are always competing with themselves in the company, within the company, so as to make sure that anybody coming from outside will not be better than them. So that is why that will always lead to a much better performance. Next, the last one is optimum utilization of resources. Staffing helps in recruiting right people at right place for the right job. Again, the same thing. It provides training to employees which increases their efficiency, or any smallest increase of efficiency is giving back to the society. क्योंकि जब भी आप किसी भी तरह का efficiency increase करते हो, किसी भी तरह का, आप टाइम रिड्यूस करते हो, आप जब भी टाइम रिडक्शन करते हो ना, तो आप वैल्यू इंक्रीज करते हो. आप वैल्यू इंक्रीज करते हो ना, तो आप सोसाइटी को यू आर एबल टू गिव बैक टू द सोसाइटी. मतलब आई विल गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल. एक कोई काम है जिसके लिए एक एम्प्लॉय को पहले 10 घंटे लगते थे. नाउ द कंपनी हैज ट्रेन्ड दैट एम्प्लॉय टू डू दैट जॉब इन 6 hours. Now that employee has 4 hours left. That employee can now utilize those 4 hours that are left of his work to do something that is, maybe he can spend 2 hours with his family, maybe he can spend 2 hours to do something for the society. You are, as a company, you have made sure that the employee is doing something for the society. This leads to optimum utilization of resources. So optimum utilization of resources, जहाँ भी word आता है ना, वहाँ पे आप सोसाइटी को you're giving back to the society, and you are actually making optimum utilization of resources. और you can be rest assured that this is the best way to be, that this is the best way to make your company efficient. Okay, thank you very much. Let's meet next week with the next function of management. See you. Take care.